Hello, Matujima, and you're watching Northeast Express on HornbillTV. Assam Water Resources and Public Affairs Minister Piyush Hazarika on Monday expressed unwavering confidence in the BJP's prospects in the upcoming Panchayat elections. Addressing the media at Vajpayee Bhavan, Hazarika predicted a sweeping victory for his party while sharply criticizing the opposition Congress. Responding to Congress preparations, including the formation of poll committees, Hazarika dismissed the move as ineffective. He alleged that he do not think anything significant will come out of this committee. Congress is a party of corruption. They distribute tickets like a license for corruption. He also took aim at Congress' tendency to question the electoral process only after defeats. Minister questioned whenever they lose, they make these baseless claims. Why did not they say the same things when they won in Telangana and Karnataka? Hazarika's remarks comes as political parties across the state ramp up their activities ahead of the Panchayat elections expected later this year. I am overconfident. We are coming back with thumping majority in Panchayat election. I don't think something will happen with this committee. I don't think so. But Congress is a party of corruption. They have given ticket with the license of corruption. So I don't think with this committee some concrete result will come. Wherever they lost, they do say all this. Why didn't say this thing when they own in Telangana, when they own in Karnataka, where they lost, they say all these rubbish things. A serious lapse in infrastructure maintenance has come to light at Guwahati railway station, where two female railway employees were injured after a portion of the ceiling collapsed at the ticket counter on the Baltan Bazaar site earlier this morning. Despite prior complaints about the damaged structure, no action was taken, raising questions about negligence and safety. Here's more on the shocking incident that unfolded just as the station was beginning its day. एक्चुअली हम सुबह में 7 बजे काउंटर खुलने के लिए आया तो खुल रही थी, उस टाइम में वो गिर गया, मेरे हाथ में थोड़ा गिरा तो हम इधर से चले आए दौड़ के। तो काउंटर खुली नहीं पाई, इतना टाइम में इतना लंबा लाइन था, जैसे तैसे कर ये लाइन तो क्लियर करना था क्योंकि उस समय बहुत सारा पैसेंजर था, नहीं तो बहुत सारा पैसेंजर का ट्रेन भी मिस हो जाता, इसलिए वो जैसे तैसे करके लाइन तो क्लियर किया, लेकिन मेरा हाथ में थोड़ा लग गया, और उसको भी थोड़ा लगा, इतना भी ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन मेरे हाथ में तो लगा। ये तो बहुत दिन से कंप्लेंट भी किया हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। Despite the district police administration did not grant permission, the Jana Adhikar Sangram Parishad organized a protest rally and public meeting at Visalkar railway station on Sunday, opposing the proposed amendments to the Waqf Act. The event witnessed the presence of several prominent political leaders, including President of the Tripura Human Rights Commission, Purushottam Roy Barman, former minister, and CPIM leader Banu Lal Shaha, CPIM Subdivision Committee Secretary Bata Pratim Majumdar, Tripura Mota Minority Cell Chairman Shah Alam, Tripura Mota Charilam Block President Buddhadev Barma, and Vishalkar District Congress President Gopinath Shaha. প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা দেখতে পারবেন হাজার হাজার লোক এই মাঠে এসে প্রবেশ করবে আমাদের প্রোগ্রামকে সাফল্যিত করার জন্য। কেমন লোক আসতে পারে এখনো তো ধারণা করা যাচ্ছে না, আমরা যতটুকু আশা করি তার থেকেও বেশি প্রশাসনিকভাবেও আমাদের কাছে খবর আছে বা আমরাও বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে জেনেছি যে আমাদের আশার থেকেও বেশি লোক হবে এখানে। প্রশাসন কেমন হেল্প করছে আমাদেরকে? সম্পূর্ণরূপে প্রশাসন হেল্প করছে, কোনো সমস্যা নেই। আমরা পিসফুলভাবে আজকে আমরা এই আন্দোলনটা করি। বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যেখানে দুষ্ট লোকরা আছে, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর লোকরা আছে, তারা গিয়ে ডিএমএর কাছে দরখাস্ত করে দিয়ে বলবে এই যে বলছে এটা তো ওয়াকফ না, এটা সরকারি সম্পত্তি হয়ে গেল কাল্লা ফতে, এটা কি করে হবে? এবং প্রধান বিচারপতির কথা বলেছি, আমাদের দেশে দলিল দস্তাবেজ কবে থেকে চালু হলো? যখন ব্রিটিশরা এসে
আমাদের দেশে রেজিস্ট্রেশন চালু করলেন, আমাদের দেশে প্রপার্টি চালু করলেন, তখন থেকে দলিল দস্তাবেজের ব্যবস্থা আমাদের দেশে চালু হলো। কিন্তু এর পূর্বে মুঘল আমলে বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশে দলিল দস্তাবেজের ব্যবস্থা ছিল না। অধিকাংশ ওয়াকফ সৃষ্টি হয়েছে বাই ইউজ, ব্যবহারের দ্বারা কোনো দলিল দস্তাবেজ থাকে না। এখন আপনারা যেটা করছেন, এর ফলে নতুন করে বিবাদ তৈরি হবে, নতুন করে অশান্তি তৈরি হবে, নতুন করে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তৈরি হবে। এই কারণে তারা আইনটা করেছে, তারা আইনটা করেছে অত্যন্ত বড় উদ্দেশ্যে। তাদের আইনটা হচ্ছে ওয়াকফ সম্পত্তিকে বেয়াত করে দাও। ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রামে যেমন আছে, দিল্লিতে আছে, আগ্রাতে আছে, মথুরায় আছে, হায়দ্রাবাদে আছে, ব্যাঙ্গালোর আছে, চেন্নাই আছে, বড় বড় সম্পত্তি। এখন যদি এই সম্পত্তিগুলোকে ডিসপুটেড করে দেওয়া যায়, এবং ডিসপুটের নিষ্পত্তি কে করবেন? ডিসপুটের নিষ্পত্তি করবেন জেলা শাসক। ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো? Following concerns from locals in 5 Tripura Panchayats about Bangladesh raising the height of embankments along the Muhuri River, Tripura PWT Secretary Chirang visited Bilonia in South Tripura district. Residents of Netaji Subhash Chandra Nagar, Ishan Chandra Nagar, North Bilonia and Balamukha reported that the embankment on the Indian side was damaged during the August 2024 floods, leaving the region vulnerable to flash floods during the monsoon. During a review meeting, Gide assured residents that restoration and maintenance of the Indian embankments would be expedited. To ensure timely completion before the upcoming monsoon, 5 engineers will be deputed to Bilonia. He stated that the area has a heavier workload, necessitating additional manpower. Gide further informed that flood protection embankments have been planned for 43 vulnerable locations, with significant progress already made in the many of them. He urged the public to stay calm, assuring that the department is confident of finishing the work by June, providing there is public cooperation. The move aims to address the heightened flood risk in the border villages and safeguard lives and property before the monsoon season intensifies. আমাদের গ্রাম বল্লামুখা, শ্রীনগর এবং আপনার সুকান্তনগর, আইসিনগর, এসবিসি নগর সমস্ত গ্রাম প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। এই বাঁধটা মেরামতের জন্য সরকারের কোনো উদ্যোগে আমরা দেখতে না পেরে আমরা বিভিন্নভাবে এমএলএ থেকে শুরু করে গ্রাম প্রধান থেকে শুরু করে সবাইকে বলেছি, কেউ আসেনি। পরবর্তী সময়ে যখন বাংলাদেশ বাঁধটা কমপ্লিট করে নিয়েছে, তখন তারা সবাই এসেছে। আসার পর থেকে এখন আমাদের যে গ্রামগুলি প্লাবিত হয়ে যাবে বর্ষার ফলে, কিন্তু সঠিক সলিউশন হলো একটা আনপ্রেসিডেন্টেড ফ্লাড সিচুয়েশন হয়েছে। তখন অনেক নদী, অনেক শহরের মধ্যে আমাদের এম্বাঙ্কমেন্ট ছিল, এটা ভেঙে গেছে, ড্যামেজ হয়েছে। বিশেষ করে সাউথ ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বেশি রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছিল। তো তারপরে আমাদের কিছু কাজ এখানে চালু আছে। তো এখন যে মহুরি নদী, এটা লেফট ব্যাঙ্ক, রাইট ব্যাঙ্ক, দুটো ব্যাঙ্কে আমাদের কাজ চালু আছে। আর কিছু কাজ আমাদের আগামী দিনে শুরু হবে। তো এই কাজ দেখার জন্যে এবং এখানে যে আমাদের লোকাল যে লোক প্রতিনিধি আছেন, যারা চেয়ারম্যান আছেন, প্রধান আছেন, আপনারা সবাই জানেন গত মার্চ মাসে যে আমাদের অ্যাসেম্বলি সেশন, বাজেট সেশন মধ্যেও এটা ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। তো আমরা 43 লোকেশন রাজ্যে আমরা চিহ্নিত করেছি, সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিধানসভাতে বলেছেন। 43 লোকেশন আছে যেখানে আমাদের ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের কাজ করা উচিত, আর এখানে কাজ চলছে। তো আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের সবাই যে পাবলিককে আমি অনুরোধ করব কি আমাদের ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট আর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট সেটা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। হয়তো In Manipur, MP Dr. Akoicham Bimol on Sunday declared that Manipur situation will not be considered normal until the last displaced family finds their way home and there is free movement. Breaking his silence in a charged press briefing at his residence in Imphal, Bimol unleashed a scathing critique of the central government's handling of the Manipur conflict. Bimol tore into the government's partisan approach to disarmament, warning that the crackdown on armed groups risk
being perceived as a selective operation that targets specific communities. With public trust waning and clarify on SOO agreements still lacking, he questioned why Parliament was denied the opportunity to even debate the issue under the pretext of national security. The MP also expressed personal sorrow and political shame that none of Manipur's 3 members of Parliament, himself included, were allowed to speak when President's rule in the state was tabled. I think, until unless we have a free movement and these IDPs are not able to return homes, never ever we should think that we are normal. The peace has returned to the state. Until these 2 conditions are not satisfied, the issue is still alive, number 1. We should not forget that. And I have insisted right from the day 1 that when you crack down on the armed groups, it should be done judiciously. It should not be seen as a partisan activity. Certain communities have been targeted and some others not. That feeling should not be given. As unfortunately, that feeling has been given. That's the impression that you are telling me right now. I have heard a lot of people saying about it. And it is in relation to that, that's what I am saying, we need to have a clarity on SOO, whether the suspension operation. Assam Pradesh PJP President Dilip Saikia, after campaigning for Panchayat polls in the 3 districts of Barak Valley on Sunday, holding a press conference at party headquarters in Silchar on Monday morning before leaving for Guwahati, said the protests against Waqf Amendment Act that are being witnessed in Bengal as well as in Assam are being fueled by Congress party. Saikia said that this act would benefit the common Muslims who has been used by the Congress party for more than half a century to just carry out their appeasement and divisive policies. Saikia said that the Muslims living in India are more safe now under PM Narendra Modi at the centre and CM Dr. Himanta Biswa Sarma in Assam than any other Muslim majority nations, including Pakistan. भड़काव में न आए। कांग्रेस का जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, विभाजन जो राजनीति कांग्रेस हमेशा करते आते हैं, एपीजमेंट पॉलिसी जो कांग्रेस हमेशा अपनाते आ रहे हैं, ये एपीजमेंट और डिविजिव पॉलिटिक्स के बीच में जो साधारण मुसलमान इसका चक्कर में न पड़े। 55 साल 50 साल कांग्रेस ने ये गरीब मुसलमान के ऊपर बहुत अन्याय किया है। उनका अधिकार छीना, हमेशा चुनाव के समय नमाज बंद कर देगा, मस्जिद बंद कर देगा, वो बंद कर देगा, ये बंद कर देगा बोल करके ये लोग डराते हैं साधारण मुसलमान को। हकीकत में बीजेपी सरकार आने के बाद भारत का मुसलमान जितना शांति में रह रहा है, पाकिस्तान में भी अदर मुस्लिम्स कंट्रीज में भी मुसलमान इतना सुरक्षित नहीं है, भारत में जितना सुरक्षित है। यही बढ़ता है, दूसरा कुछ देखने का जरूरत नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में, आसाम में हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में कहीं पर भी छोटा सा भी एक दिन के लिए कहीं मतलब ना कर्फ्यू लगा, ना कहीं कोई कम्युनिटी कोई कुछ ऐसा इश्यू हुआ, ना कोई दंगे हुए, ऐसा कम्युनल कोई टेंशन हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये कांग्रेस ने जानबूझ करके पूरे असम को, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, असम को, देश को मतलब पीछे धकेलना चाहता है। इसलिए मुसलमान समाज इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के माध्यम से हम उनको एम्पावर्ड करने के लिए इस विधेयक को हमने लाया था और सदन ने दोनों विधेयक के ऊपर दोनों सदनों ने इनका समर्थन किया और हम सब लोग आज गौरव से बोल सकता है जब मुसलमान समाज के लिए अगर कोई अच्छा सोचा है तो नरेंद्र मोदी जी सोचा है और डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी सोचा है। A wave of grief has swept through the global Catholic community, including here in Northeast India, following the passing of Pope Francis. The spiritual head of the Catholic Church breathed his last early this morning, leaving millions in mourning. Father G.P. Amalraj, Deputy Secretary of Northeast India Regional Bishops' Council, expressed profound sorrow and outlined the steps being taken by the Church in the region to honor the Pope's memory. आज हम लोगों का पोप
गुजर गए और उनको आज हम लोग जो दुनिया का बड़ा कैथोलिक चर्च का बड़ा सोचते हैं वही आज गए हैं, क्योंकि वही रिप्रेजेंट होता है यीशु का रूप का। आज उनको अथॉरिटी दिया हुआ है। वही पोप आज उसी बीमार का कारण से कुछ दिन 1 महीना तक हॉस्पिटल में थे। अभी थोड़ा दिन का पहले बाहर निकला, लेकिन आज सुना है 7:35 में सुबह वेटिकन टाइम में वो गुजर गए। हम लोग दुख करते हैं कैथोलिक मंडली, वो कैथोलिक जो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और बिशप्स काउंसिल आज यही है द हेड ऑफिस ऑफ हम लोग का कैथोलिक चर्च का। इधर में हम लोग यही न्यूज़ सबको देते हैं कि उन्हीं के उनका आत्मा को प्रार्थना करने के लिए और मिस्सा बलिदान करने का, और ज़रूर पूरा कैथोलिक चर्च का इंस्टीट्यूशन जो भी है वो बंद रहेगा कल। वही है हम लोगों का नियम अभी। और कंडोलेंसेस के लिए कुछ अलग नियम है आप लोग का यहाँ से? कंडोलेंसेस हम लोग ज़रूर भेजेंगे हम लोगों का बिशप्स कॉन्फ्रेंस से और पूरा इंडियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस से, और हम लोगों का बिशप लोग बड़ा ऑफिस कार्डिनल लोग और बिशप लोग कोई उधर में रिप्रेजेंट करेंगे। उनका जब दफन देगा वो उसी टाइम में। In a major breakthrough, Meghalaya police has dismantled a national network facilitating illegal entry, identity forgery and banking fraud involving Bangladeshi nationals. The operation, spearheaded by IPS probationer Ashu Pant, began on February 14, 2025 when 5 illegal immigrants were intercepted at a checkpoint in Nongpo. Despite possessing Aadhaar and PAN cards, interrogation revealed that group had illegally entered India and travelled to Mumbai before attempting to return to Bangladesh. Investigations uncovered a racket led by Sheikh Mot Mujib in Mumbai Suri area who facilitated forged Indian documents using fake addresses. Further raids in Navi Mumbai and South Mumbai led to the arrest of key accomplices Nusrat A. Qazi and Jabir Yunus Shaikh. The accused allegedly used forged identities to open bank accounts, later exploited for loans, frauds and cybercrimes. The crackdown was executed by a special Meghalaya police team with support from Navi Mumbai and Mumbai police. All suspects have been taken to Meghalaya on transit remand for further investigation. Authorities warn that the case reflects a broader network of illegal migration and financial crime, underlining the need for enhanced border security, interagency vigilance and stronger diplomatic engagement with Bangladesh. In a shocking and gruesome incident, a 60-year-old man in Assam's Chirang district allegedly beheaded his wife and carried her severed head to the police station in a basket mounted on his bicycle. The incident occurred on Saturday evening in the village of Uttar Palamguri under Bijni subdivision. The accused British Hadong, a daily wage earner, reportedly killed his wife, Majanti Hadong, following a domestic dispute. According to locals, the couple frequently quarreled over minor issues. British returned home from work on Saturday and got into another argument with his wife. In a fit of rage, he beheaded her with a sharp weapon and later cycled to the Balamkuri police station with her head, a resident said. Speaking to reporters, Chirang Additional Superintendent of Police Rashmi Rekha Sarma confirmed the incident. They have taken custody of the body and sent it for post-mortem. Forensic experts have also collected samples from the scene. The husband has been detained and an investigation is underway. এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। আমি ডেড বডি এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি উঠাইছোঁ, ফৰেনচিকৰ টিমো আহি পাইছে। আমাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে। যিগৰাকীয়ে মাৰিছোঁ বুলি কৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে থানাত আমি আটক কৰিছোঁ আৰু তেওঁ থানাত আছে। এতিয়া আমি গোটেইখিনি তদন্ত কৰিহে আচল কথাখিনি গম পোৱা যাব। ধন্যবাদ। এতিয়ালৈকে অনুমানৰ ভিত্তিত আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ। গোটেইখিনি ঘটনা ভালদৰে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, সেইখিনি শেষ হৈ লওক, তাৰপিছত আমি কাৰণখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। Pope Francis, the first Latin American leader of the Roman Catholic Church, has died today.
He was 88 years old. Pope Francis had suffered from various ailments in his 12-year papacy and has recently been undergoing respiratory therapy. Pope Francis, the head of the Roman Catholic Church, whose real name was George Mario Bergoglio, was elected to be Pope in March 2013. The pontiff became Pope after Benedict XVI resigned. The Vatican has confirmed the news in a video statement on Monday, April 21. The statement read, Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. His passing away comes just a day after his surprise public appearance on Easter Sunday, greeting a crowd of more than 35,000 in St. Peter's Square in what marked his most significant outing since recovering from a severe case of double pneumonia. The Congress Party will hold a series of press conferences across 57 cities from April 21 to 27 in protest against the Enforcement Directorate's charge sheet against top party leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in the National Herald case. Titled Congress Truths, BJP Lies, the campaign is aimed at countering what the party alleged is a politically motivated move by the BJP government. Pawan Khera, Chairman, Media and Publicity Department, AICC, called the ED's charge sheet an anti-national efforts by the BJP to erase the legacy of the National Herald, which has described as a living monument of India's freedom struggle. According to a list, many, including Gaurav Gogoi, will hold a presser in Assam, Supriya Srinade in Chhattisgarh, P. Chidambaram in Delhi, Ashok Gehlot in Himachal Pradesh, Dibendra S. Huda in Kerala, Shashi Tharoor in Lakshadweep, Bhupesh Baghel in Odisha, Dr. Shama Mot and Dr. Kanhaiya Kumar in Rajasthan, Randeep Singh Surjewal in Telangana, Alka Lampa in UP will hold pressers in 57 cities of India. The Indian Space Research Organisation ISRO on Monday successfully completed the second docking of satellites under its SpaceX mission. Union Minister Jitendra Singh confirmed the development and extended his congratulations to ISRO team. This event marked yet another significant milestone in India's space research program. The PSLV-C60 SpaceX mission was launched on December 30, 2024. Following the launch, the first successful docking occurred on January 16, 2025 at 6:20 a.m. The satellites were later undocked on March 13 and 9:20 a.m. ISRO has also announced the further experimental procedures are scheduled to take place over the next 2 weeks. On March 13, ISRO announced the successful completion of SpaceX mission space dedocking. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.